Yes. Changes and Changes development and in financial reporting. Accounting accounting for digital assets. This section discusses the accounting treatment of two issues: cryptocurrency and initial coin offerings. Cryptocurrency. The cryptocurrencies are virtual currencies that provide the holder with various rights. They are not issued by the central authority and so exist outside the government control. Cryptocurrencies such as Bitcoin can be used to purchase some goods and services, although they are not widely accepted. The market value is extremely volatile, and some investors make high returns through short-term trade. These are basically digital currencies और ये basically shares की तरह ही होते हैं. इनको खरीदा जाता है and hold किया जाता है till they become some value. The accounting treatment of cryptocurrency is not clear. The cryptocurrency do not constitute cash because they cannot be readily exchanged for goods and services. Moreover, they do not qualify as a cash equivalent. In accordance with IAS 7, statement of cash flows, because they are subject to significant risk of a change in value because they are extremely volatile in nature. इसके लिए they are not considered as cash equivalent. An investment in cryptocurrency does not represent an investment in an equity of another entity or a contractual right to receive cash, and so does not meet the definition of financial asset as per IAS 32 financial instruments presentation. The most applicable accounting standard would appear to be IAS 38, intangible assets, because cryptocurrencies is an identifiable non-monetary asset without the physical substance. इनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ऐसे फिजिकली देखे नहीं जाते, इसके लिए इनको इंटेंजिबल एसेट्स माना जाता है अंडर IAS 38. Although cryptocurrencies most likely fall within the scope of IAS 38, the measurement models in that standard do not seem appropriate. The fair value of cryptocurrency is volatile, and so a cost-based measure is unlikely to provide relevant information. क्योंकि वो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, अपन फेयर वैल्यू नहीं उसका मतलब इतने इजीली डिटरमाइन कर सकते. The revaluation model in IAS 38 initially seems more appropriate, but this requires gains on remeasurement to fair value to be presented in other comprehensive income. Many entities invest in cryptocurrencies to benefit from short-term changes in fair value, and gains or losses on short-term investments are normally recorded in the profit or loss. Thus, for example, assets inside the scope of IFRS 9 financial instruments. तो ये लोग कंपनीज चाहती है P&L में डालना, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का इफेक्ट अंडर IAS 38 रिवैल्यूएशन मॉडल जाता है OCI में, तो इसलिए ये मतलब सही नहीं बैठता. The accounting treatment of cryptocurrencies is not straightforward. In the absence of an appropriate accounting standard, the preparers of financial statements should refer to the principles in existing IFRS standards as well as the conceptual framework in order to develop an accounting policy. Next, initial coin offerings. Initial coin offerings are a method of raising finance through cryptographic assets. Investors, sometimes called supporters, buy into the ICO, which is initial coin offerings, and receive tokens in exchange. This is similar to the approach used in crowdfunding, with ICOs originally being used by tech entrepreneurs. Basically, ICOs are just like IPOs. जो IPO shares के लिए होते हैं, ICOs coins के लिए होते हैं, जैसे मतलब बिटकॉइन वगैरह हो गया वैसा. Tokens received might entitle the holder to cryptocurrencies, or they might be utility tokens which provide users with access to a product or service, or security tokens which might provide an economic stake in the entity or right to receive cash or assets in the future.
these are as good as IPOs. Yeah, tokens can become valuable and can often be traded on the crypto exchange. Just like stock exchange एक crypto exchange होता है, वहां पे ये tokens buy and sell हो सकते हैं. ICOs are largely unregulated. हाँ, ये मेन दिक्कत है. ICOs are largely unregulated, allowing companies to bypass the regulated and lengthy process of raising finance through a bank. When an entity raises funds via an ICO, it will record the receipt of an asset as a debit entry. This this receipt might be in cash or or a different cryptocurrency such as bitcoins. However, the key consideration is determining the credit entry that should be posted. The location of the credit entry is dependent on the nature of the tokens issued. मतलब अपनी जो डेबिट एंट्री है उसको अब अपने को कैश में डालना है, मतलब डेबिट द कैश. लेकिन जो क्रेडिट करना है उसका लोकेशन डिटरमाइन करना मुश्किल है, बिकॉज वो चीज करती है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टोकन, कि शायद हमने उस चीज को कहाँ से बाय किया है वगैरह ऐसा. ये नहीं, इन्होंने दिया है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अच्छे से. पॉसिबिलिटीज में आता है फाइनेंशियल लायबिलिटी. द रिपोर्टिंग एंटिटी माइट बी कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू द होल्डर ऑफ द टोकन्स. Equity. The holder of the token issued through the ICO may be entitled to payments out of the distributable reserves. This token would classify as equity if the reporting entity was under no contractual obligation to deliver cash or another financial asset. This token would qualify as an equity if the reporting entity was under no contractual obligation to deliver cash और अनदर फाइनेंशियल एसेट. अगर ऐसा कहीं बोला नहीं गया था कि हम लोग शेयर्स के लिए मतलब बोनस शेयर्स या कैश या एसेट ये सब देंगे, डिविडेंड वगैरह कुछ देंगे, उस टाइम पे हम इस टोकन को एज इक्विटी क्वालिफाई कर सकते हैं. Revenue. If the recipient was a customer and if a contract as per IFRS 15, revenue from contracts with customer exist. अच्छा, अगर हमें वो टोकन्स किसी कस्टमर के थ्रू मिले थे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, देन वो चीज को हम लोग डेबिट सॉरी क्रेडिट एंट्री उसकी उसकी रेवेन्यू में पास करेंगे. नन ऑफ कैश द. कंसिडरेशन जैसे होता है उसकी जगह बिटकॉइंस दे दिए वैसा है, हम्म. मतलब इंस्टेड ऑफ कैश. ओके. एग्जैक्टली, कैश की जगह पे बिटकॉइंस दे रहे कस्टमर उस चीज के लिए ऐसा. None of the above. If there is a legal or constructive obligation to the subscriber, then a provision should be recognized in accordance with IAS 37 provisions, contingent liabilities, and contingent assets. If an entity determines that no specific IFRS standard applies to its issued tokens, then it should refer to IAS 8 accounting policies, changes in accounting estimates and errors, and refer to the conceptual framework in order to develop an appropriate accounting policy. अच्छा, अगर इधर भी नहीं जाएगा ऐसा एंटिटी को लग रहा है, तो या तो उसका प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए डेफर्ड कंसिडरेशन के जैसा, या फिर एक्चुअली प्रोविजन ओनली इज अ बेटर टर्म, प्रोविजन के जैसा. एंड उसके बाद ये ने क्या बोला, इफ एन एंटिटी डिटरमाइंस दैट नो स्पेसिफिक आईएफआरएस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू इट्स इशूड टोकन. अगर कोई भी आईएफआरएस स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहा है तो आईएस 8 को रेफर करना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एरर्स इट रिफर्स टू. कौन से हेड के अंडर ये आता है. Similar accounting dilemmas exist with security token offerings, where investors are issued with tokens representing a stake in an external asset, such as shares or bonds. Accounting for the effects of natural disaster. Natural disasters include volcanic eruptions, earthquakes, droughts, tsunamis, floods, hurricanes, and pandemics. Natural disasters devastate communities
and the process of recovery can take years. Companies that operate in areas affected by natural disasters will also have a will also have to consider the financial reporting consequences. Consequences कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि impairments. A natural disaster is likely to trigger an impairment review, particularly in relation to property, plant, and equipment. Because, in accordance with IAS 36, impairment of assets are there are likely to be indicators of impairment. एक natural disaster एक asset को इतना खराब कर सकता है कि उसका impairment करना जरूरी पड़ जाए. The impairment may arise because individual assets are damaged or because the economic consequences of the disaster trigger a decline in customer demand. If PPE is destroyed, then it should be de-recognized rather than impaired. PPE is destroyed, तो उसको de-recognize करना ज्यादा बेटर है. अच्छा, अगर वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब यानी कि डिस्ट्रॉय ही अगर हो गई, नॉट इवन डैमेज, डिस्ट्रॉय अगर हो गई तो उसको डी रिकॉग्नाइज ही करना चाहिए rather than impairing it. In line with IFRS 9, financial instruments, entities that lend money will need to assess whether credit risk associated with the financial assets has increased significantly. A natural disaster is likely to lead to a higher default rate, so some financial assets will become credit impaired. अच्छा, मतलब कुछ एसेट जो हमने बढ़ कस्टमर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ एसेट जो हमने कस्टमर्स को क्रेडिट पे दिए थे, ऐसा अज्यूम करते कि मेरे लायबिलिटी मतलब कस्टमर हैड टू पे मी से 400, बट बिकॉज एक नेचुरल डिजास्टर आ गया, वो भी कस्टमर भी बोल रहा है कि अरे थोड़ा तो कम करो, अच्छा, नेचुरल डिजास्टर है. पेबल्स कम करने हैं अपन को अपने। अपने पेबल्स नहीं, अपने वो अपने अमाउंट रिसीवेबल्स, अमाउंट। अपने 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 रिसीवेबल्स ना. कस्टमर अपने को हाँ बोल रहा हाँ है कि यार हाँ हाँ नेचुरल हाँ हाँ डिजास्टर आ हाँ गया, थोड़ा हाँ कम करो ऐसा. हाँ हाँ। हाँ, ओके ओके ओके। या तो इट फिर कोई कैन बी बोथ एसेट. वेज ना। क्या क्या? ओके ओके, इट कैन बी बोथ वेज ना, अपने को भी तो नेचुरल डिजास्टर हिट कर सकता है। बराबर बराबर, इवन इट कैन बी आपके भी। बोथ वेज. एंड इवन यहाँ पे इन्होंने बोला है क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल एसेट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई ऐसा शेयर का प्राइस इतना नीचे गिर जाए बिकॉज ऑफ जस्ट दैट नेचुरल डिजास्टर, कि मतलब हमें इम्पेयरमेंट करना पड़े, या नॉट इम्पेयरमेंट मतलब इज नॉट द ऐसा राइट वर्ड, बट कम हो जाए. प्रोबेबली ऐसा हो कि सामने वाला अपन को बहुत ओ करता है, बट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट ही हैज बीन थ्रू ही विल जस्ट लेट हिम पे। मतलब तो कुछ तो पे करे, समथिंग बेटर देन नथिंग, मे बी लाइक दैट। इसके लिए वो बोलेगा भाई थोड़ा कम कर दो। राइट. फिर आता आसान है ही होता है यार। फिर आता है नेचुरल ये डिजास्टर्स may lead to inventory damage. Alternatively, the economic consequences of the disaster may mean that inventory must be sold at a reduced price. As per IS 2 inventory, some inventory may need to be remeasured from its cost to its net realizable value, because inventory is always valued at cost or in net realizable value, whichever is lower. तो नेचुरल डिजास्टर इन्वेंट्री का वैल्यू नीचे ला सकते हैं, पड़ेगी. Insurance, it is likely that entities affected by natural disaster will need to account for insurance claim. Insurance claims can be a difficult accounting issue because of the uncertainty regarding the nature of the claim, the type of coverage provided by the insurance, and the timing and the amount of any proceeds recoverable. IS 37 provision contingent liability and asset only allows the recognition of an asset from an insurance claim if receipt is virtually certain. This is a high threshold of probability and so recognition is unlikely. However, if an insurance payout is deemed probable, then a contingent asset can be disclosed. Okay, अगर अपन इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो एक तो पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्लेम करना बिकॉज ऑफ द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर दैट। दूसरा, अगर अपन उसको क्लेम कर रहे हैं तो अपन उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर उसकी प्रोबेबिलिटी वर्चुअली सर्टेन है तो अपन उसको एज अ कंटिजेंट एसेट दिखाएंगे, अदरवाइज इट विल ईदर बी डिस्क्लोज्ड लाइक, और या तो उसको इग्नोर मारेंगे। Additional liabilities. As a result of a natural disaster,
An entity may decide to sell or terminate a line of business or to save costs by reducing employee headcount. मतलब या तो वो बंद कर देगा एक पार्ट ऑफ हिज बिजनेस, या तो वो एम्प्लॉयज निकालने लग जाएगा, सो दैट उसका कॉस्ट कम हो सके. In accordance with IAS 37, a provision will be recognized if there is a present obligation from a past event and outflow of economic benefits is probable. प्रोविजन तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब भी उसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अगर ड्यू टू पास्ट इवेंट उसका आउटफ्लो इज नेसेसरी. An obligation only exists if a restructuring plan has been implemented or if a detailed plan has been publicly announced. When measuring the provision, only the direct cost from the restructuring, such as the employee redundancy, should be included. बट बेसिकली बताया कि अगर अपन मेजर करें प्रोविजन को तो डायरेक्ट कॉस्ट को ही इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज द एम्प्लॉय रिडंडेंसी, वो इंक्लूड होना चाहिए. Provision may be required if there is an obligation. Provision may be required if there is an obligation to repair the environmental damage. अच्छा, रिपेयर मतलब अपन प्रोविजन क्रिएट करेंगे फॉर रिपेयर ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज. यूजुअली अपन आई गेस प्रोविजन नहीं क्रिएट करते हैं फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट, बट इन दिस केस अगर देयर इज अ एनवायरमेंटल डैमेज का रिपेयर तो उसके लिए विल क्रिएट अ प्रोविजन. मोर ओवर, decommissioning provisions, when an entity is obliged to decommission an asset at the end of its life and restore the land, will require review because the natural disaster may alter the time or amount of the required cash flow. Correct. मतलब जिस दिन नेचुरल डिजास्टर होगा उस दिन उसका क्या वैल्यू रहेगा सब उसके लिए अपन को फिगर आउट करना पड़ेगा बिकॉज वैल्यू चेंजेस विद टाइम, तो अमाउंट एंड टाइम उस टाइम का देखा जाएगा. Deferred tax. A natural disaster may affect companies' estimate of future taxable profit. In accordance with IAS 12, income taxes change to future taxable profit. Estimates may mean that deferred tax asset cannot be recognized. A natural disaster may affect a company's estimate of future taxable profit. अगर करेक्ट मतलब अगर बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया तो अपन टैक्सेस चेंज हो सकते हैं बिकॉज अपना लॉस में जा सकता है या एक्सपेंस ज्यादा हो सकता है. In accordance with IAS 12, income taxes changes to future taxable profit estimates meaning deferred tax asset cannot be recognized. Okay, तो फिर deferred tax asset को recognize नहीं कर सकते in case of this situation. Going concern, natural disaster may lead to changes in economic environment as well as business interruption and additional cost. Of course, मतलब जब ये सब होता है नेचुरल डिजास्टर तो अपना कंडीशंस बदल सकते हैं, एडिशनल कॉस्ट आ सकता है, बिजनेस इंटरप्ट हो सकता है. इट मे बी दैट बैंक लोन कन्वीनियंस आर ब्रीच्ड. ओके, बैंक के जो लोन के जो आई गेस अपने रूल्स थे वो ब्रीच हो सकते हैं बिकॉज प्रोबब्ली आर नॉट एबल टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एक्स वाई जेड. मतलब मे बी द पेइंग अमाउंट ऑफ द बैंक जो लिमिट सेट किया था दैट माइट इंक्रीज बिकॉज नाउ एक सर्टेन नेचुरल डिजास्टर हो गया. If there are material uncertainty relating to going concern, then these must be disclosed in accordance with the IAS presentation of financial statement. If the going concern assumption is not appropriate, then the financial statement must be read at an alternative basis, and this fact must be disclosed. So basically, अगर भाई बहुत बड़ा कुछ तुम्हारी कंपनी की बाट लग गई और तुम इस हालत पे आ गए कि तुम्हारा गोइंग कंसर्न हो रहा है, तुम नहीं सरवाइव कर पाओगे, तो you have to show that in the financial statement. Accounting for climatic change, global events, and going concern assessments. Just like with natural disaster, there is no single IFI standard which addresses the impact of climate changes. Just like with natural disaster, there is no IFI standard which addresses the impact of natural and global events. However, a company must consider climate-related matters and global events when the effect is material on the financial statement. Okay, अगर कुछ material effect होएगा तो फिर उनको climate related matters को consider करना चाहिए. Take a look at the question below which will allow you to apply knowledge to the particular global event, a pandemic. Nice. बस क्या ये लास्ट है क्या? हाँ, फिर आई थिंक ये TYU है और फिर नहीं नहीं है थोड़ा सा टाइम है. है क्या? ठीक है. Test your understanding one. Middle shop. Middle shop operates in the fashion retail industry and has a year end of 31st December 2001. Middle shop operates in a fashion retail industry जिसका year end 31st December 2001 है. It owns 15 stores, all located in one country. And accounting for using the cost model in IS 16 of property, plant and equipment. Okay.
और वो कॉस्ट मॉडल यूज करता है। इसकी सारी की सारी 15 स्टोर्स एक ही कंट्री में है। ड्यू टू एन इंटरनेशनल पैंडमिक, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इन विच मिडिल शॉप ऑपरेट्स required all non-essential retail and hospitality outlets to close for several months during 2001. ओके, बिकॉज एक इंटरनेशनल पैंडेमिक हुआ उसके कारण गवर्नमेंट कहती है मिडिल शॉप जिधर ऑपरेट करता है कि सारे नॉन एसेंशियल रिटेल और हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया जाता है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट फर्दर क्लोजर विल बी mandated throughout 2002 until an effective vaccine is developed and rolled out amongst the population. Okay, कि जब तक ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि 2002 तक भी एक और साल बंद ही चलेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। द पैंडेमिक हैज हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फैशन इंडस्ट्री। नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था फैशन इंडस्ट्री पे। Demand for new clothes has declined due to the national and localist lockdowns as well as limit as on inter-household socializing and the increased uptake of home working. तो because of home कपड़े नहीं खरीद रहे तो फिर डाउनफॉल हो गया था फैशन में। Moreover, the full economic impact of the pandemic has yet to be released, with unemployment expected to rise significantly throughout 2002. तो बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली कोई काम धंधा रहेगा ही नहीं। तो मिडिल शॉप स्टोर्स वर ओपन फॉर ट्रेडिंग ड्यूरिंग दिसंबर 2001। दिसंबर 2001 तक तो ओपन था, नॉर्मली द बिजनेस मंथ ऑफ द ईयर। हाउएवर द हाई स्ट्रीट फुटफॉल was far lower than previous years, with many consumers reducing expenditure or choosing to shop online. Middle Shop sells online through its website, but the functionality is poor and customer uptake is low. तो because of the pandemic सब लोग offline तो बंद हो गया था, तो online ही हो रहा था। Middle Shop का online है, but उसका इतना अच्छा functionality नहीं है। The website is recognized as an intangible asset and is being amortized over a remaining life of 5 years. Okay. इसको एज एन इंटेंजिबल एसेट कंसिडर किया जा रहा है वेबसाइट को ऑब्वियसली, एंड उसको अमोर्टाइज किया जा रहा है ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years. The director of Middle Shop are considering closing some large stores in 2002, although as of 31st December 2001, no firm plans had been drawn up. A significant operating loss is expected in 2002. The directors wish to provide for potential redundancy costs and the future operating loss in the financial statement for the year ended December 2001. Middle Shop has bank loans, some of which are repayable within scroll कर हम्म 12 months of reporting date. Middle Shop has bank loans, some of which are repayable within 12 months of reporting date. Discuss the financial reporting implication of the above in the Middle Shop financial statement for the year ended 31st December 2001. Okay. Oh, so basically, हम्म वो लोग large they are closing some large stores, ठीक है, in 2002. Although 31st December तक कोई plan नहीं था to close or do anything because अचानक से pandemic आया, तो फिर on that basis they are closing. A significant operating loss will occur. तो loss occur होने वाला है. Director wish to provide potential redundancy costs and future operating loss in financial statement for the year end this 31st December 2000, or bank loan लिया हुआ है that they are supposed to repay within 12 months of the reporting date. So discuss the financial reporting implication of the above in the Ministry of Finance statement. Pata, give your inputs. certain your disposal entries will be made, or certain disposal transactions will be made for the larger stores. However, there will not be an overall impact on the going concern of the company. They are making an operating loss, but there is no impact on the going concern of the company. And the financial statements will be prepared in accordance with IAS 1, presentation of financial statements of a going concern. Breakup basis will not be used. बोल बोल. Going concern by your जब तू बोल रहा है going concern, तो you mean that कंपनी बंद होने वाली है ऐसा, कि कंपनी बंद नहीं होने वाली है बंद ऐसा? नहीं होने वाली है, गोइंग कंसर्न. Okay, will continue working. हाँ, इट विल कंटिन्यू. मतलब कुछ कुछ स्टोर्स बंद हो गए हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी तक वो लोग धंधा बंद नहीं करने वाले हैं. Okay. ऐसा. And what about the significant loss expected in 2002? वो ठीक है ना, सिग्निफिकेंट लॉस भी हो रहा है तो हो रहा है. व्हाट कैन वी से अबाउट इट. और बैंक हाँ, लोन? अभी सिग्निफिकेंट लॉस जो होने वाला है 2002 में,
भी वो डायरेक्टर्स के साथ बात करना पड़ेगा। डिस्कशन इसका शुड अपन प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। नहीं रे, ऑपरेटिंग लॉस का प्रोविजन मुझे नहीं लगता क्रिएट करते हैं कभी भी। अच्छा, ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस इज समथिंग जो होने वाला है, मतलब वो तो धंधे का लॉस है, ऐसा उसका प्रोविजन नहीं क्रिएट करेंगे। और आई डोंट थिंक। लोन का, बैंक लोन। हाँ, बैंक लोन का कर सकते हैं। वो लाइन का है बैंक लोन का। हाँ। लास्ट लाइन। So this will become the current liability, and this should be taken into consideration while preparing the financial statements. अभी वो लोग ने इतना बोला है कि ऑपरेटिंग लॉस हो सकता है सिग्निफिकेंट इन 2012, तो डिस्कशन शुड बी मेड विद द ये डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेदर इट इज गोइंग टू हार्म द गोइंग कंसर्न ऑफ 2002, बट नॉट ऑफ वन। तो वन का तो अपन सीधा साधा नॉर्मल बनाएंगे, लेकिन टू का जो बनाएंगे वो अपन गोइंग कंसर्न पे बेसिस पे बनाते हैं कि ये ब्रेकअप बेसिस पे मतलब बनाना है वो। फिर वेबसाइट को उन्होंने बोला इंटेंजिबल एसेट, सो दैट वुड बी डेप्रिशिएटेड ऑन, ओ सॉरी, दैट वुड बी amortized ऑन इट्स नॉर्मल बेसिस। मैं बोल देता एक आंसर पढ़ते हैं ना। आंसर पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। मैं बोल देता इंडस्ट्री एवरेज, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज लेके भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ होने नहीं वाला है। तो कहाँ गया इसका आंसर अभी। ये रहा। मैं पढ़ता हूँ। द इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड द पीरियड्स ऑफ क्लोजर आर इंडिकेटर्स दैट मिडिल शॉप्स स्टोर्स आर impaired. Poor functionality and low use suggest that the website might be impaired too. तो इन दोनों का impairment होना चाहिए। As such, per per IAS 36 impairment of assets, impairment reviews must be carried out. This involves comparing the carrying amount टू द रिकवरेबल अमाउंट। इन्होंने सीधा सीधा इम्पेयरमेंट को सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया एक लाइन में, मतलब आंसर बड़ा करने के लिए। इट इज अनलाइकली दैट इंडिविजुअल एसेट्स कैन बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, सो नीड टू बी टेस्टेड एज पार्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट। इट मे बी दैट ईच स्टोर is a CGU, that is cash generating unit. Any impairment of the assets will be will be charged to profit or loss. IAS 38 intangible assets requires annual review of amortization period. It would seem that the useful life of the website is too high because the website is will probably require replacement in near future. Any change in the useful life is dealt in accordance with IAS 8 accounting policies, changes in accounting estimates and errors, amortization rates are an estimate and so changes are dealt with prospectively. तो इन्होंने बोला है कि IAS 38 के अनुसार इसका रिव्यू होना चाहिए यूजफुल लाइफ का, और अगर यूजफुल लाइफ चेंज होने वाली है तो वो चेंज होने वाली है इन अकॉर्डेंस विद IAS 8। चेंज IAS 8 करेगा और रिव्यू IAS 38 से करना है। एमोर्टाइजेशन रेट्स आर एन एस्टिमेट, हाँ वो रेट ऑफ परसेंटेज है, वो एक एस्टिमेट है। एंड सो चेंजेस आर डेल्ट विद प्रोस्पेक्टिवली, मतलब उसको सिर्फ फ्यूचर में और करंट में चेंज करना है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जाके पास्ट में कुछ चेंज नहीं करना है। ड्यू टू डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, middle shop is likely to be holding surplus inventories. As per IS2 inventories, हाँ inventory should be measured at lower of cost and net realizable value. ये जो हम इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं बिकॉज कस्टमर अभी लेगा नहीं, तो ये जो इन्वेंट्री जो अभी बच रही है उसको भी रीवैल्यू करना चाहिए और मेजर करना चाहिए कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। सरप्लस इन्वेंट्री माइट बी डिस्पोज्ड ऑफ और स्क्रैप्ड फॉर जीरो प्रोसीड्स or sold out at a heavy discount, resulting in net realizable value falling below the cost.
Any expense that arises on remeasurement of inventories will be recognized in profit or loss. ऐसे expense को हम लोग P&L डेबिट मारेंगे. IAS 37 provision and contingencies and contingent liabilities and contingent assets. A provision must be recognized if there is a present obligation from a past event that will lead to probable outflow of resources that is capable of being measured reliably. There is no obligation to pay redundancies because there is no detailed restructuring plan in place. There is no obligation to incur future operating loss because middle shop could choose to cease trading. As such, middle shop cannot provide for redundancy cost or the future operating losses. तो हम प्रोविजन नहीं क्रिएट कर सकते. ये वो बकवास वाला पॉइंट है कि हम बंद कर सकते हैं बीच में. हाँ, ये अपन ने उसमें पढ़ा था IAS 37 में कि अपन कभी भी अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं, इसलिए अपने को ऑपरेटिंग लॉस को दिखाना ही नहीं है एज अवर प्रोविजन. Due to middle shop's economic downturn, it may not have sufficient cash to repay its short-term bank loans, creating an uncertainty over whether the entity is a going concern. In accordance with IAS 1, presentation of financial statements, going concern uncertainties must be disclosed in the notes to financial statements. Oh, right. ये गोइंग कंसर्न की जो क्वेश्चंस है, ये अभी के लिए इसमें आएंगे, डिस्क्लोजर में आएंगे. और नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग बंद करेंगे तो उसको अपने को ब्रेकअप बेसिस पे करना है. सो अभी के लिए अपने को सिर्फ डिस्क्लोजर देना है. राइट, ये But मैंने. अभी we are assuming that the company is a going concern, will not be closing, ना? फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर यस. फॉर नेक्स्ट Okay, फाइनेंशियल for ईयर next year. लेकिन हमें डिस्क्लोजर देना है कि क्या Okay, हो okay, सकता है ऐसा. okay. डेवलपमेंट्स इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. Chapter 22 Analysis and Interpretation covers the contents and scope of IFRS sustainability disclosure standards and the differences between IFRS sustainability disclosure standards and European sustainability reporting standards. These areas are identified in both SBR syllabus area E, interpreting financial and non-financial information for different stakeholders, covered in chapter 22, and syllabus area F, impact of changes and potential changes in accounting regulation, covered in this chapter. तो ये तो चैप्टर नंबर 22 का ही रेफरेंस और रिवीजन के बारे में बात की है. For ease of study, the content writer made the decision to include all of the details regarding sustainability disclosure standards with one single chapter 22 analysis and interpretation section 9 and 10. 6 chapter extent standards. Although developments in accountancy profession and forthcoming standards are central to the SBR syllabus, it is also important to be able to critique existing accounting standards. Critiques of existing standards can be found within the relevant chapters in this text. For example, IAS 1 presentation of financial statements, which is chapter 3. IFRS 15 revenue from contracts with customers. IFRS 2 share-based payments. IAS 37 provision and contingent liabilities and contingent assets. IFRS 8 operating segments. IFRS 3 business combinations. And IAS 7 statement of cash flows. इन सबको कवर किया गया है. आगे चैप्टर TYU2 mineral. Mineral owns a machine that is central to its production process. At the reporting date, the machine's carrying amount exceeds its tax base. This difference is due to the revaluation of the asset to fair value in the financial statements. Due to its importance, it is extremely unlikely that the machine will be sold. Okay. At the year end, Mineral received $10 million from investors. In return, Mineral must issue ordinary shares in 12 months' time. The number of shares to be issued will be determined based on the quoted price
of mineral shares at the issue date. Mineral owns a machine that is central to its production line. At the reporting date, the machine's carrying amount exceeds the tax base. मतलब हमने ज्यादा दिखाया हुआ है उस चीज को rather than what it should be in the market value. Impairment होना चाहिए. मतलब the difference is due to revaluation of the asset to the fair value in the financial statements. अच्छा नहीं नहीं, हमने उस चीज को फेयर वैल्यू पे लेके आए हैं. हाँ, अपन रीवैल्यू किया उसको तो फिर हम्म. उसका उसके कारण अपना टैक्स बढ़ा है। हम्म. ड्यू टू इट्स और हम इम्पोर्टेंस इट इज. बेच भी नहीं सकते बिकॉज मशीनरी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ. ड्यू टू इट्स प्रोबेबली विदाउट इम्पोर्टेंस दिस इट इज एक्सट्रीमली मशीनरी। अनलाइकली दैट द मशीन विल बी सोल्ड. ठीक है. At the year end, Mineral received $10 million from investors. In return, Mineral must issue ordinary shares of 12 months' time. The number of shares to be issued will be determined based on quoted price of Mineral shares at the issue date. मैं समझी नहीं कि इन्वेस्टर से उसे 10 मिलियन क्यों मिला। लाइक इन Hmm. एक्सचेंज ऑफ व्हाट। Shares now. In return. रिटर्न मिनरल मस्ट इशू। Hmm. अच्छा, तो इन्वेस्टर ने उसको 10 मिलियन रुपए दिए ताकि वो उस चीज के शेयर इशू कर सके बराबर इन शेयर 12 ब्रीफ months टाइम। टाइम में बराबर. नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कोटेड प्राइस ऑफ द मिनरल शेयर द इशू डेट। ओके। ओके। Briefly explain how it should be accounted for in accordance with IFRS. अच्छा, तो भाई that 10 million जो उसे मिला है Hmm. and linking it with IFRS, we have to say the relevance and the faithful representation telling that कि 10 million relevant है because material है, but faithful representation is that you should not recognize this as a revenue until and unless this thing has been, मतलब जब तक अपन को कोटेड प्राइस नहीं मिल जाता, इशू डेट नहीं आ जाता, अपन शेयर्स इशू नहीं कर देते तब तक, समथिंग लाइक दैट। The number of shares to be issued will be determined based on the quoted price of the minimum. मतलब अभी सपोज करते हैं कि शेयर का प्राइस 2 है. अभी उन्होंने अपने को दिए हैं 10 मिलियन. तो अपन इशू करेंगे 5 मिलियन शेयर्स. अगर सपोज की शेयर का प्राइस है 10, तो अपन इशू करेंगे 1 मिलियन शेयर्स. ऐसा. समझा. Briefly explain how it should be accounted for in accordance with the international financial reporting standards. Hmm. नहीं रे, मेरे को ऐसे लगता है कि द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कोटेड प्राइस ऑफ द मिनरल शेयर इशूड। तू बोल रहा है कि अगर एक प्राइस रहा तो फिर एक ही मिलियन रहेगा, ऐसा 10 मिलियन नहीं रहेगा। अगर एक शेयर का प्राइस है तो फिर 10 मिलियन शेयर जाएंगे ना. और व्हाट अगर दो इज है। व्हाट इज वेट 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 आई विल टेल यू. यहाँ पे कहाँ गया वो, व्हाट इज शेयर कैपिटल, वो बता. फॉर एवरी शेयर हाउ मच रिटर्न, वो वैसा $1 नहीं ऑफ शेयर। नहीं, व्हाट इज शेयर कैपिटल. What is share capital? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द शेयर प्राइस ना. सपोज करते हाँ हैं कि मैंने 10 10,000 रुपए डाले हैं. ठीक है. हाँ। शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 10 रुपया. लॉन्च शेयर का प्राइस चल रहा है ये दे अपना ओके ओके। 10 रुपया. 10 मिलियन है। समझा समझा समझा। तो मेरे तो नंबर ऑफ टेन शेयर मिलियन कितने डिवाइड बाई हुए. 2। ओके ओके ओके। मतलब अगर 1 रहेगा तो 10 मिलियन ही नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे। अच्छा, दैट इज द अमाउंट विच हैज बीन गिवन, एग्जैक्टली. 10 मिलियन। तो अभी ठीक है ठीक है डिस्कस ठीक है। why the accounting treatment could be argued to contradict from the definition of elements given by the conceptual framework. कंप्लीट, फ्री फ्रॉम एरर एंड न्यूट्रल, ये तीन थे अंडर द faithful representation. And relevance was the materiality part. So from the first thing we can say कि The difference is due to the revaluation of asset. कैसे दिखाएंगे उस चीज को, ऐसा बोलना चाहते हैं. अगर रिवैल्यूएशन हुआ है
तो अपन उसको ओसीआई में दिखाएंगे ना, अगर इवैल्यूएशन फर्स्ट ऑफ हुआ है ऑल, डू तो। यू थिंक कि पहले केस में इम्पेयरमेंट होगा, वो बता। नहीं। नहीं ना, क्योंकि फेयर वैल्यू मतलब बेसिस पे किया हुआ है। या तो बराबर, तो फिर ओसीआई में दिखाएंगे। ओसीआई में दिखाएंगे। हम्म। सेकंड चीज क्योंकि को आई थिंक डेफर्ड रिवैल्यूएशन कंसिडरेशन बताएंगे। revaluation and impairment are two opposite things ना. If there is हाँ, revaluation there cannot be impairment. बराबर। मतलब ऐसे मतलब, क्योंकि रीवैल्यू कब करते हैं, जब सपोज अपने वैल्यू 1,20,000 है और अब वो 1,40,000 हो गया है, तो वो रीवैल्यूएशन किया अपन उसको फेयर वैल्यू पे, तो उसका 20,000। इम्पेयरमेंट इज लाइक 1,20,000 है और मार्केट में वैल्यू इज 90,000, तो वो 30,000 का इम्पेयरमेंट हो गया, वैसा ना. हम्म। दैट इज इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू मी. तो फिर वो ओसीआई में ही जाएगा. एंड बिकॉज इट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन, दैट हाउ कैन वी कंक्लूड इट इज मटेरियल, बिकॉज द मशीनरी इज ऑफ अटर इम्पोर्टेंस, मतलब इट इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस. एंड इसके लिए वो मटेरियल है, रेलेवेंट है. एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में हाउ कैन वी से. चेक कर ले आंसर उनका। अगर नहीं बताया फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में, तो बैलेंस शीट में कैसे बताया जाएगा वही है, वो देखना पड़ेगा। Deferred tax. The carrying amount of the assets exceeds the tax base. IAS 12 income taxes. A deferred tax liability must be recognized. Okay. The deferred tax liability is measured by multiplying temporary difference by the tax rate. The tax charge will be recognized in other comprehensive income. Deferred tax is an application of the accruals concept, in that it recognizes the tax effects of a transaction in the period when the transaction occurs. Mineral has no plans to sell this asset, so there is no present obligation to pay tax that arises on disposal. Mineral has no plan to sell this asset, बराबर हमारा कोई प्लान नहीं था सेल करना उस एसेट को. So there is no present obligation टू पे टैक्स दैट अराइजेज ऑन इट्स डिस्पोजल, क्योंकि अब तक हमारा कोई प्लान नहीं है. ठीक है. द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क defines a liability as a present obligation of an entity to transfer an economic resource as a result of past event. The, the deferred tax liability does not appear to meet the definition of a liability in the conceptual framework. However, the board rejects this position. Board argues that increases in the carrying amount of an asset must the board argues that increase in the carrying amount of an asset may result in future economic benefits for the reporting entity. बराबर है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा फॉर द रिपोर्टिंग एंटिटी. Otherwise, the carrying amount is overstated, and that these inflows of economic benefits will be subject to tax. For example, the machine's fair value gain may be due to higher selling prices. For example, the machine's fair value gain may be due to higher selling prices of its output, which will therefore increase the taxable profits. The board argues that tax is payable on the revaluation irrespective of how the asset is used. तो यहाँ कहते हैं कि मशीन की जो फेयर वैल्यू की गेन हुई है वो इसीलिए हुई होगी कि शायद वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो अपन ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, विच विल देयरफॉर इंक्रीज द टैक्सेबल प्रॉफिट, क्योंकि अगर एक बार रेवेन्यू अपना बढ़ गया, अपना अपना प्रॉफिट्स भी आइडली बढ़ना चाहिए, जिसके वजह से वो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ऑन द प्रॉफिट्स. द बोर्ड आर्ग्यू दैट टैक्स इज पेएबल हाँ, मतलब ऑन. ये कहना चाह रहे हैं कि मशीनरी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब उसमें से जो आउटकम आ रहा है उसका प्राइस हाई हुआ है, तभी उस मशीन, बिकॉज आउटपुट सिर्फ हाई हुआ है उस इसीलिए टाइम वो पे नहीं, मशीन डिमांड. सिर्फ उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे भी बढ़ सकती है, ऐसा लाइक इट कैन हाँ, ऑल्सो बी द केस ऐसा. ऑल्सो भी. हम्म. हम्म.
The board argued that tax is payable on revaluation irrespective of how the asset is used. The board Basically, argues. they are saying that treatment is not according to the IFRS. Hmm. मतलब according to the IFRS revaluation gain हो रहा है, तो फिर उसको अपन को इंक्लूड करना चाहिए इन द टैक्स बेस एज वेल, और डेफर्ड टैक्स नहीं बनाना चाहिए उस चीज का, Hmm. ऐसा। Hmm. तो भाई अपन, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू, तेरे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? Hmm. मतलब अपन ने जो अभी तक पढ़ा है, तो Hmm. तुझे क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू विच पार्ट इज राइट? Result in future economic benefits. मतलब यू थिंक द टैक्स शुड बी चार्ज ऑन द रिवैल्यूएशन गेन हैपनिंग? टैक्स इज चार्ज ना, क्योंकि अपन ओसीआई में जो अपना रिवैल्यूएशन गेन दिखाते हैं दैट इज हम्म। चार्ज ना। अपने को ओसीआई पे भी टैक्स भरना तो पड़ता ही है। अच्छा, आई डोंट नो इसके लिए तो पूछा। हम्म, कोई बात नहीं, ये चैप्टर फिर से करेंगे तो हो जाएगा डेफर्ड टैक्स का एसबीआर में। टैक्स। हाँ। Financial instruments, IS 32. Financial instruments presentation states that a financial liability is a contract to deliver cash, another financial asset, or a variable number of entities' own shares. The contract requires that mineral delivers as many of its own equity instruments as are equal to value to a certain amount. As per IAS 32, this contract should be classified as a financial liability. The contract requires mineral deliver as many of its own equity instruments as are equal to a certain amount. बराबर है कि उन्होंने जितने अपने मतलब पैसे दिए। उन बोल बोल। लोगों ने अपन को प्रोवाइड किया, इसके लिए वो अपने लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। हाँ। राइट। लाइक अभी हम अपने को उतना देना भी पड़ा ना, तू देखेगी तो हाँ। they have given us 10 हाँ। million in cash. We also have to give them 5 million in शेयर्स। shares which are 2 in value. Say ऐसा. As per IAS 32, this contract should be classified as a financial liability. An equity instrument is not a resource of an entity. And so, this contract does not represent an obligation to transfer an economic resource. Therefore, the financial liability does not meet the definition of a liability in the conceptual framework. Therefore, the financial liability does not meet the definition of a liability in the conceptual framework. ठीक है? Cool.